Welcome to Revise and Resubmit, Weekend Classics. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Dolores Pereira was dabbing on more powder when her doorbell rang. It was a balmy, muggy evening in Bangalore. This was back in 1974. And she gives herself this quick once-over in the mirror. You know, salt and pepper hair, this fine-boned face that was almost gray from a really heavy film of talcum powder. And this bold orange lipstick. She looked, for all the world, like a respectable Anglo-Indian woman on her way to Mass. But she wasn't. Dolores was a fortune teller. And she was famous all over the city for her tarot cards. She'd hit the bullseye just often enough to build up this incredible word-of-mouth reputation. So, waiting outside her door were three people. And these three were about to, change the whole landscape of Indian pop culture. Yeah. There's a short, quiet man in a slightly floppy hat. That was the director, Ramesh Sippy. And next to him, a much taller man. Scruffy, unwashed-looking beard. That was the actor. And the actor's wife was there, too, an attractive woman with fair skin. They were all there because they were filming on the outskirts of Bangalore, building this huge set. And this actor? He was taking a terrifying professional risk. I mean, the stakes just could not have been higher. This was his first major role in a big feature film. And he's playing the villain. The villain, yeah. Against some of the biggest stars in the country. He could have just been completely overshadowed. So everything he had, everything his family had, was basically riding on the success of this one movie. He needed a sign. Anything. Just some kind of reassurance that this huge gamble was going to pay off. So Dolores spreads her cards out on the table. The director and the actor, they're watching in silence. Probably a little skeptical, you know. But the actor's wife, she was leaning forward, totally invested. And Dolores pauses. Lets the tension in that small, humid room just build and build. And then she points a finger right at the bearded man, and she gives her prognosis. This man, she says, is going to be right on top. His name will be known across the country. A pretty strong endorsement, right? But then she turns to Ramesh Sippy, the quiet director, and makes an even bolder claim. I mean, a frankly ridiculous claim for the time. She says, and this film is going to run for many, many years. It will become a legend. That film, of course, was Sholay. And it didn't just run for a couple of years. It ran for 5 years straight in many cinemas. It completely changed the course of Indian cinema history. And the actor, Amjad Khan, he became an instant legend, immortalized as Gabbar Singh. Indie cinema's first advertising icon. This gravelly-voiced villain whose lines were used to sell everything from biscuits to, records. Even Dolores, with all her flair for the dramatic, could not have possibly grasped the scale of that success. And that incredible, deeply human story is just one tiny nugget pulled from the pages of Anupama Chopra's definitive book, Sholay, The Making of a Classic. Today, we're going to explore the sheer chaos, the ambition, the vision, all chronicled in this book. And we're doing it with a real sense of urgency. Because, as you probably know, the film is celebrating its Golden Jubilee. But more than that, today, December 12th, 2025, Sholay, the final cut, hits theaters. Restored in breathtaking 4K, Dolby 5.1, and this is the big one. It's the first ever theatrical presentation of the original, uncensored, uncut version. That's right. This was actually planned as our weekend classics conversation, but given the monumental nature of finally seeing Sippy's true vision on the big screen, we wanted to get this to you immediately, today, on Friday. And the normal Friday conversation, that'll just air tomorrow, no big deal. It's absolutely essential, though, to frame this whole conversation by introducing the author, Anupama Chopra herself. Oh, for sure. Especially for those of you who might be preparing for a complex project or maybe even starting your own academic research journey. Her work on Sholay is it's a masterclass. It really is. It shows you exactly how thorough research and dedication can turn this chaotic production history into a definitive historical account. So who is she? Well, Anupama Chopra is an Indian author, a celebrated journalist, a highly respected film critic. She's been writing about Hindi cinema since 1993. Print, television, digital. She's done it all. And she was the festival director of the MAIM Mumbai Film Festival for years, right? Yeah. From 2015 to 2023. That's her. Her reputation for sharp, balanced critique is just unparalleled. And her academic background really speaks to the rigor you see in the book. She has a VA in English literature from St. Xavier's in Mumbai.
But the real foundation for her meticulous research was built when she went abroad. She earned her MA in journalism from Northwestern University's Medill School of Journalism. Which, as any researcher knows, is an extremely competitive, demanding environment. And while she was there, she won the prestigious Harrington Award for Academic Excellence. So you have this combination of deep cultural knowledge and professional journalist training. Which is exactly why her authority on this subject is just undeniable. And the book's reception confirmed that. When it was first published in 2000, it won the 2001 National Film Award for Best Book on Cinema in India. It's that blend of scholarly rigor and just a palpable, intense love for cinema that makes this book such a compelling roadmap. So today, we're going to guide you through Chopra's narrative, chapter by chapter. We want you to appreciate not just the finished film, but the sheer human effort, the conflict, the chaos that went into its creation. It's a masterclass in historical documentation. Okay, let's unpack this. We have to start with the title of the book's introduction itself. Right. Kitni Admai the. How many men were there? I mean, that line has gone so far beyond cinema, it's just woven into the everyday language of a nation. It instantly establishes the film's cultural weight, doesn't it? This isn't just a hit movie, it's a myth, a piece of shared heritage. The characters, Viru, Jai, Gabbar, Basanti, they're not just roles anymore, they're folklore. Even Dano, Basanti's mayor, has achieved this, minor cinematic immortality. And here's where it gets really interesting for the industry. The director Shekhar Kapoor gives this perfect quote. He says, Indian film history can be divided into Sholay BC and Sholay AD. That is such a powerful assessment. And it's not hyperbole. Sholay taught the industry this critical lesson that a commercial formula, if you execute it with total ambition and technical perfection, could create an undeniable classic. Before this, Hindi film action was, it was theatrical, almost cartoonish. Yeah, the book mentions these sissy disham fistfights. Yeah. Small scale, poorly choreographed. They just felt staged. And Sholay just completely annihilated that standard. It introduced stylized mayhem. It borrowed from the brutality of Sergio Leone, the sweeping scale of Hollywood westerns. The violence in Sholay was artistic, it was deliberate, and it was often brutal. And suddenly, that kind of violence became a staple. It transformed the whole action genre for nearly 2 decades, and it ushered in the era of the big-budget multi-star. And if you connect that technical shift to the cultural context, the timing was perfect. It captured the 1970s zeitgeist. India was going through a major mood swing then. Absolutely. The post-independence idealism was gone. The political climate was just widespread corruption, bureaucratic failure, a breakdown of law and order, all leading toward the emergency. Which created this audience that was just profoundly disillusioned. They weren't interested in the old school, morally pure heroes anymore. They wanted heroes like Jai and Virujin-clad, morally ambiguous mercenaries, rascals with a code. The message wasn't about being good, it was about being effective. Exactly, it was about bringing justice, even if you had to operate outside the law. That moral gray area, that frustration, it still resonates today. It's really the origin story of the angry young man archetype that Amitabh Bachchan was soon perfect. And that environment of feverish expectation brings us right to the book's first chapter. Shahid Katran se khelne ka shokai muche. Perhaps I am fond of playing with danger, and this chapter just details the incredible, intense competition for these career-defining roles. The setting is G.P. Sippy's huge party in January 1973. Ramesh Sippy had just had a massive hit with Sita or Gita. So everyone knew his next film was going to be monumental. And one of the male leads, the role of Chai, was still uncast. Enter Amitabh Bachchan, desperate for work, and he arrives at this party with a 102-degree fever. Sweating, head throbbing, but he is meticulously determined to smile for the press, make the right impression. His career was hanging by a thread. He'd had 10 flops. Does Jeer hadn't come out yet? Not yet. So he's lobbying everyone he can. But the industry politics were just brutal. Around midnight, the rising star, Shatrughan Sinha, makes his grand entrance. And Sinha was on a golden run. He just cruises into the center of the crowd, poses confidently with Dharmendra and Hema Malini, and as the flashbulbs are popping, he intentionally edges Bachchan out of the frame. Multiple times. The message was clear. Sinha was the future. And a distributor watching all this leans over to Ramesh Sippy and whispers this infamous piece of advice. Don't even think of that tall guy. He's bad luck. So if everyone was advising against Bachchan, how did Ramesh Sippy, this quiet, low-profile guy, manage to stick to his guns? Well, that quiet demeanor was deceptive. People saw him as just the rich producer's son, an upstart.
But the book shows he was a tremendously talented storyteller with the guts to follow his own instincts. And he had the experience. He'd spent 7 years as an assistant. He started when he realized he missed the studios too much to stay at the London School of Economics. I mean, he worked in musty production offices. At one point, his main job for 4 days was literally carrying the heroine Sadhna's slippers. That experience teaches you resilience. For sure. And that patience was tested early. During his last film, Andaz, he started working with 2 new young writers, Salim Khan and Javed Akhtar. Salim, the son of a police officer, was a failed actor who realized his strength was the art of conception, not projection. And Javed, originally named Jadoo, son of a leftist poet, started at the very bottom. Clapper boy, dialogue writer. They teamed up after a bunch of failures. But their early assignments didn't even get them credit. They were treated like the typical Munimji writers. That term, Munimji, it's so crucial. It means clerk or accountant. They were anonymous guys working for a pittance, just expected to churn out pages. So after Syed Argita was a huge success, and they were just credited to the SIPI story department, they were furious. And Salim, always the sharp critic, said writers were the scheduled cast of the industry, while the heroes and directors were the zamindars, the feudal lords. It's a great metaphor. The writers were the bedrock, but treated like second-class citizens. Exactly. And Ramesh Sippy listened. He made this revolutionary promise. He told them the next film, Sholay, would be as much their film as his. Which was totally unprecedented in Bollywood. It wasn't just about money. It was about credit, power, respect. A massive shift. And the man willing to bankroll this whole thing, this monster of a production, was Gopaldas Parmanand Sippy, GP Sippy. What a figure. A lawyer by training, a born gambler by nature. He came from Karachi in 1947 with nothing, but he just rebuilt the family fortune with these sharp, aggressive instincts. He was an innovator, right? He came up with the idea of cooperative housing societies in Mumbai. That's right. Mohini Mansion, Gopal Mansion, places where flats could be sold individually, not just rented. So why is his willingness to gamble so important here? Because of the context. In 1970, Raj Kapoor's epic Mera Naam Joker had catastrophically flopped. Producers were terrified of big, multi-star projects. But not GP Sippy. He was undeterred. He wanted scale, grandeur. He wasn't aiming for a hit, he was aiming for a legend. He was ready to play for broke. Which brings us to the idea itself. Salim Javed had 4 lines. An army officer's family is massacred. He remembers 2 court-martialed junior officers. They're brave rascals, and he enlists them for revenge. And this bare-bones concept had already been rejected. By 2 other big directors, Manmohan Desai and Prakash Mehra. Ramesh liked the essence of it, but the logistics of an army film were a nightmare. Permissions, costs, censorship. So they made the pivotal change. They changed the army man to a police officer, the Thakur. Which immediately grounded the film in that civilian frustration with law and order. Perfectly aligning it with the 70s zeitgeist we were talking about. Okay, Chapter 2. Loha loe kokatatahai. Iron cuts iron. This is where we see those 4 lines get turned into an epic. Salim and Javed basically locked themselves away in this small 12 by 12 beige room. Fueled by, countless cups of strong, sweet chai. And sometimes beer. This went on for a feverish month. Salim described it as a wave of creativity, like a sea at high tide. And their influences were clear. They wanted an Indian Western. They were devouring Hollywood Westerns, Butch Cassidy, The Magnificent Seven, and Sergio Leone's spaghetti Westerns. But the fundamental structure, that was Japanese. Akira Kurosawa's Seven Samurai. Yes, the basic framework is the same. Villagers hire mercenaries to defend them from bandits. But the genius of Salim Javed was the adaptation. They infused the rugged texture of the West with distinctly Indian melodrama, humor, and character quirks. And that structure is so symmetrical. The story is dominated by doubling. Totally. You have the principled Thakur versus the amoral Gabbar. The flirtatious Viru versus the sardonic Jai. The chatty, colorful Basanti versus the silent, white-clad widow Radha. It's brilliant. Even the heroes, Viru and Jai, they rarely showed overt affection, which made their friendship all the more compelling when it mattered. What's really fascinating is how they anchored these huge archetypes in real-life details. Gabbar Singh, for instance, wasn't a made-up name. He was a real dacoit from the 1950s in Gwalior. A man famous for plundering villages and cutting off the noses and ears of police. He even maimed a postman once, mistaking him for a cop. The name instantly carried this visceral weight of terror. And the other characters were just as personal. Surmo Bhopali was based on a real person Javed knew.
Same with the barber, Haridam Nai. And then there's the story behind Thakur Baldev Singh's name. It came from Salim Khan's father-in-law. Direct from his father-in-law, a Dogra from Jammu who was fiercely opposed to his daughter marrying a Muslim. He refused to speak to them for the first 7 years of their marriage. So by putting his name on this vengeful, honorable Thakur, Salim was maybe subconsciously working through some of that tension. It's deeply personal writing, but the most famous anecdote from real life has to be the Veer Ki Shadi proposal scene. It was directly inspired by Javed's chaotic courtship with Hani Irani. Yes, Javed was a struggling writer, and when he presented himself to Hani's mother, she was not impressed. So Javed, desperate, asks his partner Salim to carry the marriage proposal for him. And Salim decides to tank it, even though they were partners. He totally sabotages it. Hani's mother asks what the boy is like, and Salim, with this look of sincerity, says, "We are partners, lekin daru bahut pita hai." But he drinks a lot. Oh, wow. It gets worse. When she recoils in horror, Salim adds the final nail, or daru pine ke baad red light area mein bhi jata hai. And after drinking, he also visits the red light area. Unbelievable. So the whole drunken tank scene was basically real life. The only fiction was the line about not knowing his family. Everything else, the exaggeration and the sabotage that was real life, turned into cinematic gold. So once the script was solid, casting followed. Dharmendra and Hema Malini were obvious choices. Hema, though, initially balked at playing Basanti. The role only had 5.5 scenes. That says a lot about the egos in the industry. It does, but Ramesh told her the truth. This isn't your film. This is Sanjeev's and Gabbar's film. But your role will be memorable. And she agreed, based purely on her trust in him. And for Jai, Ramesh stuck to his guns, choosing Amitabh Bachchan over the much hotter Shatrughan Sinha. The main reason, according to the book, was practical. Ramesh feared, absolutely, and Jaya Baduri agreed to the small, silent role of Radha because Amitabh convinced her, and they just wanted to be together on set. And the original choice for Gabbar, the greatest villain in Hindi cinema, was the FTI graduate, Danny Dengzongpa. Which brings us to Chapter 3, Kimat Jotum Chaho, Kam Jo Main Shahon. The price you want, the work I want. This is about the colossal logistics. Ramesh knew the traditional Chambal or Rajasthan locations would look like every other duckweight film. He wanted a harsher, more remote location. A unique texture. Precisely. The art director, Ram Yedekar, was tasked with scouting. After searching all over the south, he remembered a place near Bangalore called Ramanagaram. An hour's drive from Bangalore. Perfect for a western. Vast, austere, huge black granite boulders. But it was raw wilderness. For the producer, G.P. Sippy, that meant a financial and logistical nightmare. They had to build an entire village from scratch. Ramgarh. Including a temple, a mosque, the Thakur's mansion, the water tank. They literally had to build a road to the site and install telephone lines in just 2 months. The man responsible for capturing all this was the cinematographer, Dwarka Devecha. He sounds like a character. A true force of nature. A crotchety old curmudgeon with a painter's eye and a sailor's mouth. A self-taught fourth standard dropout, but his technical knowledge was encyclopedic. A Hitler on set, apparently. Totally. But offset, he was a Shakeen Admai, a man of refined tastes. He loved whiskey, ghazals, technical books, and a good love story. His perfectionism is what made every frame so immaculate. While the set was being built, the music sitting started in Mumbai with R.D. Burman. Pancham was at his absolute zenith. Just astounding versatility. He could compose the rocking Dum Maro Dum and the classical Reina Batita Jai in the same year. He collaborated with Anand Bakshi, the king of lyrics in the 70s. They recorded at Raj Kamal Studios, the only one in India with a 6-track system at the time. The scale of the orchestration was immense. And I remember the book mentions a 6th song that was recorded but then cut from the film. Yes, a Qawwali. It was for the comedy track, but the film was already running long, even at the script stage. Bakshi was apparently the most disheartened. That commercial power was evident from the start, though. The music was sold to Polydor. For an advance royalty of 5 lakh rupees, a colossal sum, 1 lakh per song. Yeah. It was the biggest music deal in the industry at the time. The pressure must have been immense. Polydor needed to sell 100,000 records just to break even, in a market where 25,000 was a massive success. The Sippies were betting high on every single fund. But just as that ambition was soaring, the production suffered a catastrophic loss. Danny Dengzongpa, the original Gabbar, had to back out.
He was committed to Feroz Khan's Dharmatma, which was shooting in Afghanistan. And Feroz wouldn't reschedule, and the Sippies couldn't rejiggle the dates of their 5 superstars, so Danny chose to honor his commitment. Which must have sent the Sippy camp into a total panic. It did. The whole production was plunged into a desperate crisis, just weeks before shooting was supposed to start. So, Chapter 4, Mujhe Ye Bar Chahiye Zinda. I want Gabbar alive. This captures that desperation. They cycled through all the established names. Ranjit, Prem Chopra. They even considered the older, difficult Premnath, but he was dismissed as being too far past his prime. It was Salim who finally suggested Amjad Khan. A struggling theater actor with a good reputation but no major film credits. Salim spotted him at a Bronzer bandstand and just felt he fit the imposing figure. And Ramesh saw a low-angle photo of him and just clicked. He said, he had an interesting face, he looked dangerous, yet intelligent. Amjad immediately threw himself into preparation, grew a beard, studied Tarun Kumar Paduri's book of Hishaft Shambal to understand the psychology of dacoits. And the voice, that iconic raspy Gabbar lilt. Where did that come from? From a childhood memory. It was inspired by Adobe, a laundryman from his youth who used to call out, "All right, oh Shanti." Amjad internalized that tone and turned a mundane shout into this high-pitched sound of menace. And his entry into the role coincided with the birth of his son, Shadab. Yes, his son was born the same afternoon. He confirmed his screen test. But despite the joy, Amjad was profoundly insecure. He kept asking his wife if she really thought he could do it. And that anxiety came to a head during his flight to Bangalore. The famous near crash. A harrowing tale. There was a hydraulic failure. The pilot had to dump fuel and circle over Mumbai for hours. And Amjad, who rarely prayed, sat rigid, convinced this was some kind of sign. When they finally took off again, his singular terror wasn't death. It was professional humiliation. He reportedly kept muttering, "If this plane crashes, Danny gets Gabbar." The obsession was absolute. While Amjad was dealing with that, the Sippies were pushing the envelope technically. Sholay was going to be India's first 70mm film with stereophonic sound. A radical leap for India at the time. It meant shooting 2 sets of negatives for every single shot. One for the 35mm prints and one for the 70mm blow-up. It literally doubled the costs and the effort. And in the middle of this technical storm, Amitabh and Jai got married. The famous hurried wedding. They were so afraid of missing their flight to London, they were slipping the pundit 100 rupee notes to rush the ceremony. And Ramesh had assured Amitabh that Jaya's small role as the widow wouldn't be affected. But she returned from London pregnant, which presented Ramesh with a dilemma. How do you film a tragic, emaciated widow when your actress is naturally plump and glowing? So, Chapter 5, Lohagram Haimir du Hatoda. Strike while the iron is hot. Shooting finally begins. October 2nd, 1973. And it was immediately canceled due to rain. A bad omen. The first actual shot was the next day. Amitabh returning the safe keys to a 3-month pregnant Jaya. Amitabh later admitted he wasn't enthusiastic about the location. He thought dacoits belonged in Rajasthan, not the green terrain of Ramanagaram. He thought Ramesh had really lost it. Yet the Sippy set became famous for its luxury and camaraderie. It was legendary. They ran it like a high-end picnic. Badr the cook prepared this lavish banquet for 200 people every day. And crucially, the class barriers disappeared at lunchtime. Stars, spot boys, everyone ate the exact same food. And the after-hours rummy games cemented these deep bonds. But this luxury came with the cost of perfection. The initial 6-month project stretched much longer. The Sakur's massacre sequence alone took an astounding 23 days to shoot, spread across 3 schedules. Why the delay? Ramesh waited for days on end for the perfect celestial signal. Dark, heavy, overcast skies to heighten the sense of doom. He refused to shoot under bright sun. And the famous magic hour scenes with Radha and the lamps. Notoriously time-consuming. Those minute long silent sequences took 20 days to shoot, all for those few minutes of velvety dusk each day. The crew started calling it the Lady of the Lamp shot, became a bit of a joke. That's incredible patience. And A.K. Hangal, playing the blind imam, used this extraordinary method to prepare. He used a psycho technique. He imagined the very origins of life's single-celled organisms swimming sightlessly in dark waters, groping for sight. That defined his performance. The resulting scene, where he mourns his martyred son, Ahmed, is devastating. It included that famous dialogue about the greatest burden being the weight of a son's corpse on a father's shoulder. But let's get back to Amjad Khan's terrifying first day. The Kitni Admaya this scene. It was a total disaster. Amjad was so nervous. He was stiff, unnatural. The scene involved him mincing tobacco.
After 40 takes, Ramesh just told him to season yourself. And Amjad went back to his room and cried that night, believing he'd ruined his career. The rumors that he was miscast were deafening. Even his champions, Salim and Javed, suggested to Ramesh that they should replace him. And this is where Ramesh Sippy showed true leadership. Against his writers, against the industry whispers, he put his foot down. Only Amjad would play Gabbar. He saw the potential, and he backed his instinct. That one decision saved Gabbar Singh and created a cinematic icon. But it's a bittersweet story. Amjad saw Salim Javed's suggestion as a profound betrayal, a feeling that stayed with him his whole life. They never worked with him again. Okay, Chapter 6. Bahut Yarana Lagta Hai. That looks like a great friendship. By this point, industry skepticism was at a fever pitch. After 7 months, the film wasn't finished. Jitendra had reportedly finished 3 films in that time. The project was being dubbed a monumental money pit. But Ramesh, with his clarity of authority, remained totally unruffled. He refused to compromise speed for his vision. And during the delays, he worked on the music. He heard a Demi Russo track in London that inspired Mehbooba oh Mehbooba. And Javed initially hated that scene. He found it too filmy, a generic Bollywood trope. But when Pancham played that raunchy, irresistible tune, Javed changed his mind instantly. And the commitment to detail, even in the chaos, was astonishing. The jailer sequence with Israni's Hitler-inspired look. It was canceled on day 2 because 2 junior artists were missing. Ramesh shut down the entire production with Amitabh and Dharmendra on set rather than substitute 2 background performers. He insisted, I want those 2. Wow. But the real drama was the Dharmendra-Hema romance unfolding on set. Sanjeev Kumar, who had already proposed to Hema, was still fiercely interested. Dharmendra was married, Hema's mother did not approve, the whole unit was just rife with tension. And Dharmendra's solution for advancing the relationship was, well, it was brilliant and wildly expensive. He bribed the crew. He paid the light boys 100 rupees per retake to deliberately mess up the lighting during romantic scenes. Just so he could hold Hema Malini longer while reshooting. On a good day, the light boys went home richer by 2,000 rupees. That's expensive flirting. Despite the hijinks, Dharmendra had a dangerous moment during the climax. He was often drinking spiked coconut water on set. He was tipsy during the final fight sequence, and when he delivered that line about scraping off Hema's fair skin, he gripped her arm too tightly and bruised her. He had to genuinely apologize later. Even the iconic dialogue was a last-minute miracle. Javed procrastinated on the water tank suicide scene for days. It was only minutes before his flight back to Mumbai that he finally wrote the entire magnificent dialogue, including Mausi ho Mausi, furiously scrawling it on the hood of his car outside the Bangalore airport. Incredible. So, Chapter 7. Jo Dar Gaya, Samjay Ho Mar Gaya. He who fears dies. This is all about revolutionizing Hindi film action. The initial attempts with local action directors just weren't working. Hindi action was small, predictable. So Ramesh made the critical decision to hire a foreign team to replicate the Hollywood Western standard. Jim Allen, Jerry Crampton, and John Gant. The crew immediately nicknamed them the Angres, the Englishmen. And communication was a nightmare. Almost impossible. They couldn't understand Dharmendra's Punjabi inflections, and the Indian stunt coordinator, Azim Bai, barely spoke English. Yeah. Jim Allen complained immediately that the Indian safety standards were non-existent, But the foreign team introduced proper pads, harnesses, new safety techniques. which immediately improved the work and fostered mutual respect. And Amjad Khan, who spoke good English, stepped up and became the crucial interpreter and logistics coordinator. And then there was the famous horse saga. Oh, the horses. The chestnut-brown racehorse Nefertiti was nicknamed Nafrati, or hateful, because she detested her riders. She threw Amjad off 5 times. But the real agony was Vijay, who played Kalia. Viju, with these menacing eyebrows made from half a false mustache, was thrown off 6 times in the first week. And Nefrati hated rifles. So Viju had to ride with his leg awkwardly sticking out just to keep the gun away from her so she wouldn't buck. After she deposited him in a thorn bush, Viju quit riding mid-shoot. He said, I'm not sitting on that horse again. And the proof of Jai and Viru's bravery was the train sequence. It had to be spectacular. They chose the Panvel urine track near Mumbai. Logistically, it was maybe the biggest headache of the entire production. Railway law strictly forbid 2 trains on the same track. So how did the Sippies get around that?
Bureaucracy met ingenuity. They created an understanding with local officials, paying a daily charge and organizing a huge daily langar, a free public meal for railway officials and local farmers. Even anti-corruption officials showed up. And had to be diplomatically made to understand the situation. That's the reality of filmmaking in the 1970s. The final shot was the train crashing through the wooden barrier. Unrepeatable. It required 3 cameras, and the train had to reverse 6 kilometers before driving at high speed to get the impact just right on the first and only take. It took 7 weeks just to film that one sequence. After nearly 2 years and 450 shifts, the film was finally completed. We turn now to post-production. Chapter 8. Yehaf Nahin Fancy Kafan Dahai. This is not a hand, it is a hangman's noose. And this phase began with Amjad Khan finally securing his legacy through his voice. That raspy sing-song voice was a source of massive anxiety, right? It didn't match his hulking presence. The industry was whispering, demanding Ramesh dub it with a stronger, deeper voice. Amjad felt personally targeted. But Jim Allen, the foreign stunt coordinator, became his unexpected champion. Allen told Ramesh, "You are totally wrong. You would be mad to change his voice." And Ramesh, again, trusted his gut. And the ultimate irony is that the voice that almost never made it to the screen sold thousands of records and became instantly recognizable. The editor, MS Shinde, had a truly gargantuan task on his hands. Ramesh had exposed over 300,000 feet of negative, which had to be cut down to 20,000. And it was still a 3-hour, 20-minute film. Entire sequences hit the cutting room floor, a Dubba fight scene, a whole subplot about a Parsi gentleman. And Shinde's innovation was critical in navigating censorship, especially with the violence. He achieved impact through suggestion. The famous example is Gabbar killing an ant with his boot, which cuts immediately to the horse carrying Ahmed's dead body. You don't see the violence, but you feel it. Exactly. The implication of senseless brutality created a far greater impact. Same with the Thakkur's arms being hacked off. It's suggested, not seen, which makes it even more traumatic for the audience. And the background music also reflected the film's huge ambition. Pancham was given a symphonic brief. For Gabbar's eerie theme, they invented a custom instrument, a large brass pot with tubes. Pouring water into it created this high-pitched, chilling screech, which they married with a cello. An entirely new, terrifying sound for Hindi cinema. And the commitment to stereophonic sound meant they had to go international. They had to mix the audio at Twickenham Studio in London because no Indian studio had the technology. Ramesh went back and forth for 3 months, recording every single sound separately, even the sound of the actual Tanga carriage, to achieve epic audio quality, unprecedented. But the single biggest conflict, the one that compromised the film's artistic integrity, came right at the end with the censor board. This was during the emergency. The board declared the original ending unacceptable. The reason was simple. A police officer, even a retired one, could not take the law into his own hands and commit murder on screen. So let's talk about that original ending. What was Sippy's true vision? It was bleak, tragic, utterly visceral. The Thakur finally corners Gabbar, and using Ramlal's nail-studded shoes, he crushes Gabbar's arms, then pounds him into a bloody mess before breaking down in tears. A Pyrrhic victory. Revenge only begets loss. It was a powerful, deeply artistic conclusion. And Ramesh Sippy was incensed by the censor's demands. He considered taking his name off the film in protest. So the film we all grew up with is actually an aesthetic compromise. How did he reconcile that? He didn't at first, but G.P. Sippy, the lawyer and realist, convinced him. He explained that during the emergency, they had no rights. If they didn't compromise, the film would simply be unreleased. All that work, all of those millions, gone. So he reluctantly reshot the ending with the police intervention in just 2 days. Weeks before the release. They were forced to apply an aesthetic clumsiness to their masterpiece just to ensure it survived. Chapter 9. Is story main emotion high, drama high, tragedy high? The initial verdict was disastrous. The premiere on August 14th was quiet. The 70mm print was stuck in customs because of some spiteful finance ministry official. The audience saw a substandard 35mm print. And the reaction? Devastating. Little reaction, no laughter, no tears, no applause, just silence. Gita Sippy called it scary. And the industry, which had waited 2 years to gloat, was merciless. We called the film Sholay. The cast was mocked as 3 warriors and a mouse. Critics called it a dead ember. The panic was immediate. They actually talked about reshooting the ending again to let Chai live, since Amitabh was now a massive star. Yeah, at a hurried meeting at Amitabh's house. But Salim Javed were vehement. They said the tragedy was essential
don't touch it. And Ramesh, having already compromised once, sided with his heart and his writers. He decided he would swim or sink with the film. Amjad Khan was devastated, convinced his unconventional voice had ruined the picture. Ramesh told his cameraman to stop printing new copies. He was accepting failure. But the distributor, Suresh Malhotra, refused to cut a single inch. He stuck by it. And weeks later, the momentum finally shifted. The audience, the real judge, began flocking back. The film the industry called a flop began running for months, then years. Even Mac Mohan, who was devastated by his tiny role as Samba, was immortalized by 3 words: Por Pachas Hazar. G.P. Sippy's prediction, this film will run for 10 years, was vindicated. So that brings us to the end of Anupama Chopra's incredible chronicle. What her book lays bare is the passion, the logistics, the ambition, and the sheer endurance required to create a flawed masterpiece. It clearly illustrates that battle between the intended artistic vision, that bleak original ending, and the censored version that became a legend. If you're a learner, someone starting your own complex research or creative project, we cannot stress enough the value of this book. Chopra's work is an exemplary model. She shows you how to document a chaotic, passionate process with forensic detail, how to navigate contradictory accounts, how to humanize technical details. It's a textbook on how to approach a messy subject and turn it into definitive history. Whether or not you subscribe to this channel, please make time to read this thoughtfully crafted book. The link is right there in the show notes. It will absolutely transform how you approach your own work. And finally, we circle back to why we released this early. The original, uncut version of Sholay hits theaters today. And if the compromised conclusion, forced by the political climate, created a film that became a national myth, Then just imagine the raw, transformative power of the original, tragic ending, the true vision of Sippy and Salim Javed finally being revealed to a new generation 50 years later. The story of Sholay is really the story of cinema itself, a battle between art, ambition, and external pressures. Enjoy the film and read the book. We'll talk to you tomorrow. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটের উইকেন্ড ক্লাসিক্স পর্বে আপনাদের স্বাগত। আমি পাভলভ। আর আমি নিকিতা। ডোলোরেস পেরেরা যখন মুখে আরও একটু পাউডার দিচ্ছিলেন, ঠিক তখনই দরজার ঘণ্টাটা বেজে উঠল। 70-এর দশকের ব্যাঙ্গালোরের এক শান্ত সন্ধ্যা। অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রমহিলা গির্জার প্রার্থনার জন্য তৈরি হচ্ছেন বলে মনে হলো আসলে তিনি একজন ভবিষ্যৎ বক্তা, একজন ট্যারট কার্ড রিডার। দরজা খোলার পর দেখলেন 3 জন দাঁড়িয়ে। একজন বেটেখাটো ফ্লপি টুপি পরা ফিল্ম ডিরেক্টর, আর একজন লম্বা দাড়িওয়ালা অভিনেতা যাকে দেখে মনে হচ্ছিল স্নান করা দরকার, আর তৃতীয়জন অভিনেতার সুন্দরী স্ত্রী। অভিনেতাটি তখন তার প্রথম ছবিতে কাজ করছিলেন, যেখানে তিনি বড় বড় তারকাদের বিরুদ্ধে একজন ভিলেনের চরিত্রে অভিনয় করছেন। ছবির সাফল্যের ওপর তার সব কিছু, মানে পুরো ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। তিনি ডোলোরেসকে অনুরোধ করলেন তার ভবিষ্যৎ বলে দেওয়ার জন্য। ডোলোরেস কার্ড বিছিয়ে বললেন, এই লোকটি অভিনেতার দিকে আঙুল দেখিয়ে একেবারে শীর্ষে পৌঁছাবে। তারপর নাটকীয়ভাবে থেমে ঘোষণা করলেন, এবং এই চলচ্চিত্রটি বহু বছর ধরে চলবে। সেই চলচ্চিত্রটি ছিল শোলে, যা 5 বছর ধরে চলেছিল এবং ভারতীয় সিনেমার ইতিহাস বদলে দিয়েছিল। আর সেই অভিনেতা ছিলেন আমজাদ খান, যিনি গব্বর সিং চরিত্রে কিংবদন্তি হয়ে ওঠেন। কি অসাধারণ একটা গল্প দিয়ে শুরু হলো, আর এই গল্পটা নেওয়া হয়েছে অনুপমা চোপড়ার লেখা শোলে দ্য মেকিং অফ আ ক্লাসিক বই থেকে। আজ আমাদের পুরো আলোচনাটাই কিন্তু এই বইটাকে ঘিরে। আর আজকের দিনটা একটা বিশেষ দিনও বটে। শোলের গোল্ডেন জুবিলি উপলক্ষে ফিল্মটির আসল আনকাট সংস্করণ শোলে দ্য ফাইনাল কাট আজ আবার প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছে। ভাবা যায় এই প্রথমবার দর্শকরা পরিচালকের আসল ক্লাইম্যাক্সটা বড় পর্দায় দেখতে পাবেন, তাও আবার 4K-তে পুনরুদ্ধার করা আর ডলবি 5.1 সাউন্ড সহ। ঠিক তাই। আর এই বিশেষ মুহূর্তকে সম্মান জানাতেই আমাদের শনিবারের উইকেন্ড ক্লাসিক্সের পর্বটি আমরা আজ মানে শুক্রবারেই প্রকাশ করছি। আচ্ছা, আমাদের শুক্রবারের নিয়মিত পর্বটি আগামীকাল শোনা যাবে। তো যে বইটা নিয়ে কথা বলছি সেটা লেখক অনুপমা চোপড়াকে নিয়ে কিছু কথা বলা দরকার। তিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত ভারতীয় লেখক, সাংবাদিক এবং চলচ্চিত্র সমালোচক। 2015 থেকে 2023 সাল পর্যন্ত মামি মুম্বাই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টরও ছিলেন। হ্যাঁ, ওনার পড়াশোনার জীবনটাও কিন্তু বেশ ঈর্ষণীয়। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ইংরেজি সাহিত্যে স্নাতক,
আর তারপর আমেরিকার নর্থ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটির মেডেল স্কুল অফ জার্নালিজম থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। ঠিক। আর তার প্রথম বই, মানে যেটা নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করছি, শোলে দ্য মেকিং অফ এ ক্লাসিক, 2001 সালে সিনেমার ওপর শ্রেষ্ঠ বই হিসাবে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জিতেছিল। আমরা আমাদের শ্রোতাদের অনুরোধ করব, আপনারা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন বা না করুন, সময় করে এই অনবদ্য বইটি অবশ্যই পড়বেন। বইটির লিঙ্ক শো নোটসে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে শুরু করা যাক। বইটির প্রথম অধ্যায়ের নাম শায়দ খাতরোं से खेलने का शौक है मुझे। বাহ! লেখক আমাদের 70-এর দশকের বলিউডের সেই উত্তাল সময় নিয়ে যান। পরিচালক রমেশ সিপ্পি তখন সীতা ওর গীতার প্রচণ্ড সাফল্যের পর আরও বড় কিছু করার কথা ভাবছেন। ঠিক, সেই সময়টা ছিল বলিউডের জন্য একটা পরিবর্তনের সময়। একদিকে রোমান্টিক হিরোদের যুগ শেষ হয়ে আসছে, আর অন্যদিকে মানুষের মধ্যে একটা চাপা ক্ষোভ তৈরি হচ্ছে। আচ্ছা, এই প্রেক্ষাপটেই সেলিম জাভেদ জুটির উত্থান। বইতে খুব সুন্দর করে বলা আছে, সেলিম খান যিনি অভিনেতা হতে এসে লেখক হয়ে গেলেন, এবং জাভেদ আখতার একজন বামপন্থী কবির ছেলে, যার আসল নাম ছিল জাদু। জাদু। হ্যাঁ, জাদু কিভাবে তাদের দেখা হলো সরাহাদি লুটেরা ছবির সেটে। তারা একসঙ্গে জুটি বেঁধে ঠিক করলেন যে ইন্ডাস্ট্রিতে লেখকদের সম্মান ফিরিয়ে আনবেন। বইয়ের একটা ঘটনা আমার দারুণ লেগেছে। একটা পার্টির দৃশ্য যেখানে অমিতাভ বচ্চন 102 ডিগ্রি জ্বর নিয়েও উপস্থিত হয়েছিলেন, শুধু একটা রোলের জন্য তদবির করতে। হ্যাঁ, কিন্তু ডিস্ট্রিবিউটররা তাকে নিতে নারাজ, কারণ তখন তার পরপর 10টা ছবি ফ্লপ। ভাবা যায় আজকের অমিতাভ বচ্চনকে কেউ না বলছে? এটাই তো সময়ের খেলা। তখন শত্রুঘ্ন সিনহা তারকা, সবাই তাকেই চাইছে, আর অমিতাভ বচ্চন স্ট্রাগল করছেন। সেলিম জাভেদই কিন্তু অমিতাভকে জঞ্জিরের জন্য সুপারিশ করেন, আর সেখান থেকেই তো অ্যাংরি ইয়াং ম্যানের জন্ম হয়। আর শোলের সময়ও এই একই লড়াই তাদের করতে হয়েছিল। একদম। তাহলে চিত্রনাট্য তো পরের ধাপ, কিন্তু শোলের মতো একটা ছবির গল্প, মানে এটা মাথায় এলো কিভাবে? এটা কি কোনো উপন্যাস থেকে নেওয়া, নাকি একেবারেই মৌলিক ভাবনা? মজার ব্যাপার হলো, বই থেকে আমরা জানতে পারি সেলিম জাভেদের কাছে প্রথমে মাত্র 4 লাইনের একটা গল্প ছিল। মাত্র 4 লাইন? হ্যাঁ, একজন আর্মি অফিসারের পরিবারকে এক ডাকাত হত্যা করে এবং তিনি প্রতিশোধ নিতে 2 অপরাধীকে নিয়োগ করেন। ব্যাস এইটুকুই। রমেশ সিপ্পির সাথে মাসব্যাপী আলোচনার পর এই 4 লাইন থেকে জন্ম নেয় 3 ঘন্টার একটা মহাকাব্য। মাত্র 4 লাইন থেকে 3 ঘন্টা স্ক্রিন প্লে, অবিশ্বাস্য। বইতে কি কোনো অনুপ্রেরণার কথা বলা আছে? কারণ অনেকেই বলেন এটা নাকি হলিউডের ওয়েস্টার্ন ছবির নকল। হ্যাঁ, অনুপ্রেরণার কথা বলা আছে। আকিরা কুরোসাওয়ার 7 স্যামুরাই বা বুচ ক্যাসিডি অ্যান্ড দ্য সানডান্স কিডের মতো ছবির ছায়া তো ছিলই, কিন্তু সেলিম জাভেদ এটাকে একেবারে ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ফেলেছিলেন। আর চরিত্রগুলো তৈরির পেছনের গল্পগুলো আরও আকর্ষণীয়। যেমন গব্বর সিং নামটা নেওয়া হয়েছিল গোয়ালিয়রের এক বাস্তব ডাকাতের নাম থেকে, যার গল্প সেলিম খান তার পুলিশ অফিসার বাবার কাছে শুনতেন। তাই নাকি? হ্যাঁ। আর জয় বীরু? জয় আর বীরু ছিলেন সেলিম খানের কলেজের 2 বন্ধুর নাম। আচ্ছা। আর বীরুর সেই বিখ্যাত মদ্যপ অবস্থায় বিয়ের প্রস্তাব দেওয়ার দৃশ্যটা, ওটার পেছনেও একটা সত্যি ঘটনা আছে। জাভেদ আখতার যখন হানি ইরানিকে বিয়ের প্রস্তাব দিতে চান, তখন তিনি সেলিম খানকে পাঠান হানির মায়ের সাথে কথা বলতে। ওহ, আচ্ছা। সেলিম খান গিয়ে হানির মায়ের কাছে জাভেদ আখতারের নামে মদ্যপান থেকে শুরু করে সব বদভ্যাসের কথা এমনভাবে বলেন যে হানির মা প্রায় রাজি হচ্ছিলেন না। সেই ঘটনায় পরে দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়। তার মানে ছবির অন্যতম সেরা কমেডি দৃশ্যটা আসলে জাভেদ আখতারের জীবনের একটা সত্যি ঘটনা। হ্যাঁ, এটা তো দারুণ ব্যাপার। আচ্ছা, চিত্রনাট্য তো হলো, কিন্তু চরিত্রদের জন্য অভিনেতা বাছাটাও তো একটা বড় চ্যালেঞ্জ ছিল, বিশেষ করে জয়ের চরিত্রের জন্য। বিশাল চ্যালেঞ্জ ছিল। ধর্মেন্দ্রা হেমা জুটি তো প্রায় নিশ্চিতই ছিল, কারণ তারা তখন সুপারস্টার জুটি। কিন্তু জয়ের চরিত্রের জন্য শত্রুঘ্ন সিনহাকেই সবাই চাইছিল। ঠিক। অমিতাভকে নেওয়ার জন্য সেলিম জাভেদকে রীতিমতো লড়াই করতে হয়েছিল। তারা রমেশ সিপ্পিকে বোঝান যে জয়ের চরিত্রটা চুপচাপ, গম্ভীর, অমিতাভের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সেটা যাবে। আর গব্বরের চরিত্রের জন্য তো প্রথমে ড্যানি ডেনজোংপাকে ভাবা হয়েছিল। 1 মিনিট, তার মানে ছবির সবচেয়ে আইকনিক চরিত্র গব্বর সিংয়ের জন্য আমজাদ খান প্রথম পছন্দ ছিলেন না? এটা তো বিশ্বাস করা কঠিন। একদমই না। ড্যানি ডেনজোংপা যদি রাজি হয়ে যেতেন, তাহলে কি আমরা আজকের গব্বরকে পেতাম না? খুব ভালো পয়েন্ট। এটাই তো সিনেমার ম্যাজিক। ভাগ্যচক্রে অনেক কিছু ঘটে যায়।
ড্যানি তখন ফিরোজ খানের ধর্মাত্মা ছবির জন্য আফগানিস্তানে শুটিং করতে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। তাই তিনি শোলে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। তখনই সেলিম খান মঞ্চাভিনেতা আমজাদ খানের কথা ভাবেন, কিন্তু তাকে নিয়েও ইউনিটে সংশয় ছিল। তার কণ্ঠস্বর নাকি খুব দুর্বল ছিল চরিত্রের জন্য। তাহলে চিত্রনাট্য তৈরি, কাস্টিং নিয়ে টালমাটাল অবস্থা, এর মধ্যেই তো লোকেশন খোঁজার কাজ চলছিল। চম্বলের ডাকাতের গল্প, অথচ শুটিং হলো দক্ষিণ ভারতে, ব্যাঙ্গালোরের কাছে রামনগরে। এই সিদ্ধান্তটা কেন নেওয়া হলো? কারণ রমেশ সিপ্পি ডাকাতদের চিরাচরিত চম্বলের ধুলোমাখা উপত্যকা থেকে বের করে একটা অন্যরকম পাথুরে রুক্ষ ল্যান্ডস্কেপ দিতে চেয়েছিলেন। আর্ট ডিরেক্টর রাম ইয়েদেকার এই জায়গাটা খুঁজে বের করেন। আচ্ছা। আর সেখানে একটা আস্ত গ্রাম তৈরি করা হয়েছিল। বইতে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। রাস্তা, মন্দির, মসজিদ, জলের ট্যাঙ্ক, ঠাকুরের বাড়ি সবকিছু শূন্য থেকে বানানো হয়েছিল। আর এই সবকিছুর সঙ্গে ছিল আর.ডি. বর্মনের সঙ্গীত। বইতে সঙ্গীতের অধ্যায়টাও নিশ্চয়ই খুব আকর্ষণীয়। অবশ্যই। মেহবুবা মেহবুবা গানটা যে আর.ডি. বর্মনের নিজের গলায় গাওয়া, বা ইয়ে দোস্তি গানটার জন্য জয় আর বীরুকে একটা সাইড কারওয়ালা মোটরসাইকেলে পুরো ব্যাঙ্গালোর চক্কর কাটতে হয়েছিল সঠিক সুরটা খোঁজার জন্য। এই সব গল্প আছে। দারুণ। তবে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো একটা কাওয়ালি রেকর্ড করা হয়েছিল, যেটা ছবিতে ব্যবহারই করা হয়নি। কিশোর কুমার, মান্না দে, ভূপেন্দর আর গীতিকার আনন্দ বাক্সি নিজে সেই কাওয়ালিটা গেয়েছিলেন। কি বলছেন? হ্যাঁ, কিন্তু ছবিটা লম্বা হয়ে যাওয়ায় গানটা বাদ দিতে হয়। ভাবা যায়, এতজন কিংবদন্তি একসঙ্গে একটা গান গাইলেন আর সেটা বাদ পড়ে গেল। আচ্ছা, এবার আবার গব্বরের গল্পে ফেরা যাক। আমজাদ খানকে তাহলে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত করা হলো। তার প্রস্তুতি কেমন ছিল? বইতে আমজাদ খানের প্রস্তুতির এক দারুণ বর্ণনা আছে। তিনি চরিত্রটা নিয়ে এতটাই মগ্ন হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি ডাকাতদের উপর লেখা বই অভিশপ্ত চম্বল পড়েন, নিজের হাঁটাচলা, কথা বলার ভঙ্গি সব বদলে ফেলেন। এমনকি তিনি তার এক ধোপার কথা বলার ভঙ্গিও নকল করেন, যা তার সংলাপে একটা অন্য মাত্রা যোগ করেছিল। এরপর শুরু হলো শুটিং। বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের নাম লোহা গরম হ্যাঁ মারদো হাতোড়া। নামটা শুনেই বোঝা যাচ্ছে কাজটা সহজ ছিল না। একেবারেই না। যদিও সেটের জীবনযাত্রা ছিল পিকনিকের মতো। বইতে লেখা আছে প্রায় 200 জনের জন্য এলাহি খাবারের ব্যবস্থা থাকত, যেখানে ধর্মেন্দ্র থেকে শুরু করে স্পট বয় সবাই একসাথে খেতেন। বাহ। কিন্তু শুটিং ছিল অত্যন্ত কঠিন। একটা উদাহরণ দিই। রাধার প্রদীপ নেভানোর সেই বিখ্যাত দৃশ্যটা, যেখানে জয়া বচ্চনের মুখে কোনো সংলাপ নেই, শুধু অভিব্যক্তি। হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। ওই দৃশ্যটা শ্যুট করতে 20 দিন লেগেছিল। 20 দিন একটা সংলাপহীন দৃশ্যের জন্য? কেন? কারণ রমেশ সিপ্পি শুধুমাত্র ম্যাজিক আওয়ারের আলোতে শটটা নিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ সূর্যাস্তের ঠিক পরের মুহূর্তে যে হালকা আভাটা থাকে, সেই কয়েক মিনিটের জন্য। নিখুঁত শট পাওয়ার জন্য তিনি 20 দিন ধরে অপেক্ষা করেছিলেন। অবিশ্বাস্য। এটা পরিচালকের দূরদর্শিতা আর ধৈর্যের একটা অসাধারণ উদাহরণ। কিন্তু আমজাদ খানের প্রথম দিনের শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা নাকি খুব খারাপ ছিল। ভয়ঙ্কর। কিতনে আদমি থে, এই সামান্য সংলাপটি বলতে তার নাকি 40টিরও বেশি টেক লেগেছিল। 40টা টেক? হ্যাঁ, তিনি এতটাই নার্ভাস ছিলেন যে তার অভিনয় যান্ত্রিক মনে হচ্ছিল। জাভেদ আখতার তো প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। ইউনিটের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয় যে আমজাদ খানকে হয়তো বাদ দেওয়া হবে। আচ্ছা। কিন্তু রমেশ সিপ্পি তার উপর বিশ্বাস রেখেছিলেন। তিনি আমজাদকে বলেন, চিন্তা করো না, তুমি আমার গব্বার। একজন পরিচালকের বিশ্বাস যে কিভাবে একজন অভিনেতাকে তৈরি করতে পারে, এটা তার প্রমাণ। একদিকে এত বড় একটা ছবির চাপ, অন্যদিকে ধর্মেন্দ্রর দুষ্টুমি। বইতে নাকি তার আর হেমা মালিনীর প্রেমেরও কিছু মজার গল্প আছে। হ্যাঁ আছে। ধর্মেন্দ্র নাকি লাইট বয়দের টাকা দিতেন শট নষ্ট করার জন্য, বিশেষ করে কোনো রোম্যান্টিক দৃশ্যে। কেন? যাতে তিনি হেমাকে আরও একবার জড়িয়ে ধরতে পারেন। প্রেম, ঝামেলা, সৃষ্টিশীলতা সবকিছু মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল শোলের সেটে। আচ্ছা, ছবির অ্যাকশন দৃশ্যগুলো নিয়েও তো অনেক কথা হয়, বিশেষ করে ট্রেনের দৃশ্যটা। 70-এর দশকে ওই ধরনের দৃশ্য শ্যুট করা তো প্রায় অসম্ভব ছিল। কাজ শুরু হলেও হলিউডের মান আনার জন্য লন্ডন থেকে জিম অ্যালেন এবং তার টিমকে নিয়ে আসা হয়। বইটির অন্যতম আকর্ষণীয় অংশ হল ট্রেনের সেই বিখ্যাত অ্যাকশন দৃশ্যটি শুটিংয়ের বর্ণনা। প্রায় 7 সপ্তাহ ধরে পানভেল উড়ান রেল লাইনে এই দৃশ্যটি শ্যুট করা হয়।
রেলওয়ের নিয়ম ভাঙা থেকে শুরু করে চলন্ত ট্রেনের উপর মারপিট, ঘোড়া ছোটানো সবই সত্যিকারের ছিল, কোনো ভিএফএক্স ছাড়াই। কিন্তু ছবির সবচেয়ে বড় লড়াইটা তো পর্দার বাইরে হয়েছিল, সেন্সর বোর্ডের সঙ্গে। এই অংশটা বইতে কিভাবে এসেছে? খুব নাটকীয়ভাবে। রমেশ সিপ্পির মূল ছবিতে ঠাকুর নিজের কাঁটা লাগানো জুতো দিয়ে গব্বরকে পিটিয়ে মেরে ফেলেন। এটা ছিল ঠাকুরের ব্যক্তিগত প্রতিশোধের চরম প্রকাশ। ঠিক। কিন্তু সেন্সর বোর্ড এই হিংসতা এবং আইনের অপব্যবহার মেনে নিতে পারেনি। বিশেষ করে তখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। রাষ্ট্র চাইছিল না যে কোনো ব্যক্তি আইন নিজের হাতে তুলে নিক, এই বার্তা যাক। তার মানে ছবির মূল ভাবনাটাকেই পাল্টে দিতে বলা হলো। একেবারে। অনেক লড়াইয়ের পর রমেশ সিপ্পিকে বাধ্য হয়ে ক্লাইম্যাক্স আবার শ্যুট করতে হয়, যেখানে পুলিশ এসে গব্বরকে গ্রেপ্তার করে। ঠাকুরের প্রতিশোধের পর যে একটা শূন্যতা, একটা হতাশা কাজ করত, সেন্সরের কারণে সেই গভীরতাটা আর দর্শকদের কাছে পৌঁছায়নি। ভাগ্যিস আজকের এই ফাইনাল কাটে আমরা পরিচালকের আসল ভাবনাটা দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে এত বাধা পেরিয়ে 15ই আগস্ট 1975-এ ছবিটা মুক্তি পেল, আর প্রথম সপ্তাহে চূড়ান্তভাবে ফ্লপ হলো। এটা কিভাবে সম্ভব? এটাই তো শোলের গল্পের সবচেয়ে বড় টুইস্ট। প্রথম সপ্তাহে ছবিটা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়। সমালোচকরা ছবিটিকে মরা অঙ্গার বা ডেড অ্যাম্বার বলে আখ্যা দেন। আচ্ছা। ইন্ডাস্ট্রিও ছবিটিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করতে শুরু করে, নাম দেয় স্লিপি। ডিস্ট্রিবিউটররা ছবি ছোট করার পরামর্শ দেন। একটা সময় তো অমিতাভ বচ্চনের চরিত্র জয়কে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ক্লাইম্যাক্স আবার বদলানোরও কথা ভাবা হয়েছিল। জয়কে বাঁচিয়ে রাখা? তাহলে তো ছবির পুরো আবেগটাই নষ্ট হয়ে যেত। ঠিক, কিন্তু প্রযোজক পরিচালকের উপর চাপ ছিল অসম্ভব। কিন্তু এক সপ্তাহ পর থেকে ছবিটির ভাগ্য বদলাতে শুরু করে। কোনো বিজ্ঞাপন বা প্রচার ছাড়াই শুধু মানুষের মুখে মুখে ছবির সংলাপ, চরিত্রগুলো জনপ্রিয় হতে শুরু করে। কিতনে আদমি থে, তেরা ক্যা হোগা কালিয়া, বসন্তি, ইন কুত্তো কে সামনে মত নাচনা, এই সংলাপগুলো লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগলো। আর তারপর যা হলো তা ইতিহাস। যে ছবিটা প্রায় বাডে হয়ে যাচ্ছিল, সেটাই ভারতীয় সিনেমার মাইলস্টোন হয়ে গেল। বইটা আমাদের শুধু একটা সিনেমার পেছনের গল্পই বলে না, বরং সৃষ্টিশীলতার প্রতি আবেগ, অধ্যবসায় এবং বিশ্বাসের এক অসাধারণ দলিল হয়ে ওঠে। একদম। শোলে শুধু একটা সিনেমা নয়, এটা একটা ফেনোমেনন। এটা দেখায় যে কিভাবে একদল মানুষ তাদের স্বপ্নের ওপর বিশ্বাস রেখে সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে একটা কালজয়ী শিল্প তৈরি করতে পারে। বইটা পড়লে বোঝা যায় এই সাফল্যটা কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, এর পেছনে ছিল রক্ত, ঘাম আর অফুরন্ত প্যাশন। আজ যখন আমরা ছবিটির 50 বছর পূর্তি উদযাপন করছি, তখন একটা প্রশ্ন মনে আসছে, যে ছবিটিকে প্রথম সপ্তাহে সমালোচক থেকে শুরু করে ইন্ডাস্ট্রির সকলেই প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই ছবিটি কিভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠল? সময়ের পরীক্ষায় আসলে কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নাকি শিল্পের স্থায়ী আবেদন? এই ভাবনাটাই হয়তো আজকের আলোচনার শেষে আমাদের শ্রোতাদের জন্য রইল। नमस्कार और रिवाइज एंड रीसबमिट की वीकेंड क्लासिक्स एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलो और मैं हूं निकिता। बात है 1974 की एक शाम की। बेंगलोर में एक भविष्यवक्ता थी, डोलोरस परेरा। वो अपने घर पर थी और अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। बाहर 3 लोग खड़े थे, एक फिल्म डायरेक्टर, एक कह सकते हैं घबराया हुआ दाढ़ी वाला एक्टर, और उसकी पत्नी। वो एक्टर अपनी पहली ही फिल्म में एक बहुत बड़े विलेन का रोल कर रहा था। जाहिर है भविष्य की चिंता तो होगी ही। डोलोरस ने अपने टायरो कार्ड्स निकाले, उन्हें फैलाया और कुछ देर खामोशी से देखने के बाद कहा, ये आदमी, ये तो बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, और ये फिल्म तो कई सालों तक चलेगी। और वो एक्टर थे अमजद खान, और फिल्म थी शोले, डोलोरस परेरा की भविष्यवाणी। सिर्फ सच नहीं हुई, बल्कि शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की होगी कि वो कितनी बड़ी सच्चाई बनने वाली थी। फिल्म सिनेमाघरों में 5 साल तक चली, और गब्बर सिंह का किरदार वो तो भारतीय सिनेमा के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। क्या शानदार शुरुआत है। और आज की हमारी ये पूरी बातचीत ऐसे ही न जाने कितने किस्सों से भरी अनुपमा चोपड़ा की नेशनल अवार्ड विजेता किताब शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक पर आधारित है। बिल्कुल, और आज का दिन भी बहुत खास है। आज 12 दिसंबर 2025 है।
और शोले की गोल्डन जुबली के मौके पर इसका जो ओरिजिनल अनकट वर्जन है, शोले द फाइनल कट, वो 4K रेस्टोरेशन और डॉल्बी 5.1 साउंड के साथ पहली बार थिएटर्स में रिलीज हुआ है। हाँ, ये वही वर्जन है जिसे निर्देशक रमेश सिप्पी बनाना चाहते थे। और इसी खास मौके का जश्न मनाने के लिए हमने एक छोटा सा बदलाव किया है। हमारा जो शनिवार को आने वाला वीकेंड क्लासिक्स है वो आज यानी शुक्रवार को ही रिलीज किया जा रहा है। और हमारा जो शुक्रवार का नियमित एपिसोड है वो आपको कल सुनने को मिलेगा। अच्छा, इस किताब की लेखिका अनुपमा चोपड़ा वैसे तो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक जानी मानी लेखिका, पत्रकार और फिल्म क्रिटिक हैं। कलकत्ता में जन्मी, उत्तर प्रदेश के बदायूं में पली बढ़ी। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में BA किया और फिर अमेरिका की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में MA किया। वहां उन्हें पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए हैरिंगटन अवार्ड भी मिला। और वो 1993 से हिंदी सिनेमा के बारे में लिख रही हैं। मामी मुंबई फिल्म फेस्टिवल की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। उनकी शादी फिल्म निर्माता विधु विनोद चोपड़ा से हुई है। और जिस किताब पर आज हम बात कर रहे हैं, जो उनकी पहली किताब थी, उसे 2001 में सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ किताब का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। हम आमतौर पर ऐसा कहते नहीं हैं, लेकिन इस बार कहेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, इस किताब को पढ़ने के लिए समय जरूर निकालें। लिंक शो नोट्स में है। हाँ, जरूर। ये सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, ये किसी भी सपने को, जुनून को हकीकत में बदलने की कहानी है। तो आज हमारा मकसद सिर्फ शोले के किस्से सुनाना नहीं है, बल्कि इस किताब के जरिए ये समझना है कि कैसे एक छोटा सा आइडिया, एक जुनून और सैकड़ों लोगों की मेहनत एक कालजयी कलाकृति में बदल जाती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। इस महाकाव्य का जन्म कहाँ और कैसे हुआ? इसकी शुरुआत होती है 1973 की एक फिल्मी पार्टी से। माहौल में जश्न भी है और एक अजीब सी बेचैनी भी। निर्माता GP सिप्पी और उनके बेटे रमेश सिप्पी सीता और गीता की जबरदस्त सफलता के बाद बॉलीवुड के टॉप पर हैं। वो अपनी अगली फिल्म को और भी बड़ा बनाना चाहते थे, एक मल्टी स्टारर एडवेंचर। और उसी पार्टी में अमिताभ बच्चन भी हैं, 102 डिग्री बुखार में। लगातार 10 फ्लॉप फिल्में देने के बाद वो बस किसी तरह एक और रोल पाने की उम्मीद में वहां मौजूद हैं। मुझे लगता है उस वक्त कोई उन पर दांव नहीं लगाना चाहता होगा। बिल्कुल नहीं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी तो फिल्म के लिए तय थे, लेकिन दूसरे हीरो के रोल के लिए कोई चेहरा नहीं मिल रहा था। तभी पार्टी में उस वक्त के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा की धमाकेदार एंट्री होती है। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर तुरंत रमेश सिप्पी के पास जाकर फुसफुसाते हैं, ये है आपकी कास्टिंग, उस लंबू जी के बारे में सोचना भी मत। अरे वाह, मतलब इंडस्ट्री का पूरा दबाव शत्रुघ्न सिन्हा के पक्ष में था। तो फिर कहानी में अमिताभ बच्चन आए कैसे? यहाँ पर लेखकों की एंट्री होती है ना? हाँ, और यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। इस कहानी के पीछे का दिमाग थे सलीम जावेद। सलीम खान जो एक एक्टर के तौर पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनमें प्रोजेक्शन की कला नहीं बल्कि कॉन्सेप्शन की कला है। मतलब वो कहानियां गढ़ सकते हैं। और दूसरे थे जावेद अख्तर, एक मशहूर शायर के बेटे जो क्लैपर बॉय से डायलॉग राइटर बने थे। दोनों की मुलाकात सरहदी लुटेरा के सेट पर हुई और हिंदी सिनेमा की सबसे सफल लेखक जोड़ी बन गई। और शोले का आइडिया उनके पास पहले से था क्या? कोई पूरी बंदी हुई स्क्रिप्ट थी? यही तो कमाल की बात है, उनके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं थी। सिर्फ 4 लाइनों का एक आइडिया था। एक आर्मी ऑफिसर है जिसके परिवार को एक डाकू मार देता है। वो बदला लेने के लिए 2 बहादुर बदमाशों को काम पर रखता है। बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही। और इस आइडिया को मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा जैसे बड़े निर्देशक पहले ही ठुकरा चुके थे। 4 लाइनों का आइडिया, और उसे भी 2 बड़े डायरेक्टर्स रिजेक्ट कर चुके थे। तो सिपीज ने इसमें ऐसा क्या देखा? उनके सामने 2 विकल्प थे। एक थी मजबूर की पूरी तैयार स्क्रिप्ट जो बाद में अमिताभ बच्चन के साथ बनी, और दूसरा था ये 4 लाइनों का अधूरा आइडिया। जी। GP सिप्पी ने एक पल सोचा और कहा, मुझे एक बड़ी फिल्म बनानी है, इन 4 लाइनों को डेवलप करो। ये एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन यहीं से शोले का सफर शुरू हुआ। तो अब लेखकों को एक कैनवस मिल गया था। इसके बाद वे कहाँ बैठे, कैसे इस 4 लाइन के स्केच में रंग भरे गए? सिप्पी फिल्म्स के एक छोटे से 12 बाय 12 के कमरे में 1 महीने तक रमेश सिप्पी, सलीम और जावेद उस कमरे में बंद रहे। सुबह से शाम तक वो कहानी के किरदारों पर, सीन्स पर, डायलॉग्स पर काम करते रहे। उनकी प्रेरणा साफ थी, हॉलीवुड की वेस्टर्न फिल्में जैसे बुच कैसिडी या द मैग्निफिसेंट 7।
वो एक इंडियन वेस्टर्न बनाना चाहते थे। और इस कहानी की बनावट भी बड़ी खास है, हर चीज जोड़ियों में है, ठाकुर और गब्बर, जय और वीरू। हाँ बिल्कुल, यहाँ तक कि बसंती की चुलबुली शख्सियत और राधा की खामोशी भी एक दूसरे को पूरा करती है। सही बात है। और किरदारों के नाम, उनके पीछे भी तो बड़े मजेदार किस्से हैं। अरे बहुत, वो भी कहीं बाहर से नहीं आए, वो उनके आसपास की दुनिया से ही उठाए गए थे। गब्बर सिंह ग्वालियर के एक असली डाकू का नाम था, जो सजा के तौर पर पुलिस वालों के नाक कान काट देता था। सच में ये तो बहुत डरावना है। और बाकी किरदार? सूरमा भोपाली भोपाल के एक असली व्यक्ति थे जिन्हें जावेद अख्तर जानते थे। और ठाकुर बलदेव सिंह, वो सलीम खान के ससुर का नाम था। कमाल है, मतलब सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि शायद असल जिंदगी के किस्से भी सीधे स्क्रिप्ट में पहुंच गए होंगे। बिल्कुल। इसका सबसे मजेदार उदाहरण है वीरू की शादी वाला सीन, जहां वीरू बसंती की मौसी से शादी की बात करने जाता है। वो सीन असल में जावेद अख्तर के शादी के प्रस्ताव से प्रेरित था। जावेद जी हनी रानी से शादी करना चाहते थे और उन्होंने सलीम साहब से कहा कि वो उनकी माँ से जाकर बात करें। और मुझे अंदाजा है कि सलीम साहब ने सीन को थोड़ा और मसालेदार बना दिया होगा। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा। सलीम खान हनी रानी की माँ के पास गए और बड़ी गंभीरता से कहा, देखिए लड़का बहुत अच्छा है लेकिन दारू बहुत पीता है और दारू पीने के बाद सीधा रेड लाइट एरिया में जाता है, जुआ भी खेलता है, बस यही कुछ बुरी आदतें हैं, वरना दिल का बहुत साफ है। बेचारी हनी जी की माँ का चेहरा देखने लायक था। बाद में यही किस्सा फिल्म का एक अमर सीन बन गया। ये तो अविश्वसनीय है। स्क्रिप्ट तो तैयार थी और वो भी ऐसी जिसमें हर किरदार दमदार था, लेकिन अब चुनौती थी इन किरदारों के लिए सही चेहरे ढूंढने की। कास्टिंग तो अपने आप में एक महाकाव्य रही होगी। एक महाकाव्य से कम नहीं। हेमा मालिनी को जब बसंती का रोल सुनाया गया तो उन्हें लगा कि ये बहुत छोटा है, सिर्फ 5.5 सीन, लेकिन रमेश सिप्पी के निर्देशन पर उन्हें इतना भरोसा था कि वो मान गई। और जय के रोल के लिए? जय के रोल के लिए जैसा हमने बताया, डिस्ट्रीब्यूटर शत्रुघ्न सिन्हा के लिए अड़े हुए थे, लेकिन सलीम जावेद ने अमिताभ बच्चन के नाम पर वीटो कर दिया। उनका मानना था कि अमिताभ की आंखों में वो खामोश गहराई थी जो जय के किरदार के लिए जरूरी थी। और ठाकुर के रोल के लिए? संजीव कुमार तो एक बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन क्या वो पहली पसंद थे? नहीं, ठाकुर के रोल के लिए प्राण साहब से भी बात हुई थी, लेकिन संजीव कुमार की अभिनय क्षमता को देखते हुए उन्हें चुना गया। और सबसे बड़ा सरप्राइज, गब्बर का रोल डैनी डेंजोंगपा को मिला था। डैनी डेंजोंगपा? हाँ, वो उस वक्त के सबसे स्टाइलिश विलन माने जाते थे। ये तो कमाल है, मतलब हर बड़ा एक्टर विलन या हीरो के बजाय दूसरे रोल करना चाहता था। क्या ये स्क्रिप्ट की ताकत थी? ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रिप्ट की ताकत थी। हर किरदार इतना मजबूती से लिखा गया था कि एक्टर्स को लगा कि दूसरे का रोल ज्यादा बेहतर है। अमिताभ बच्चन गब्बर का रोल करना चाहते थे और धर्मेंद्र, जो उस वक्त सबसे बड़े एक्शन हीरो थे, उन्होंने ठाकुर का रोल मांगा। धर्मेंद्र ठाकुर का रोल करना चाहते थे, फिर वो वीरू के रोल के लिए कैसे माने? यहाँ रमेश सिप्पी ने एक मजेदार चाल चली। उन्हें पता था कि सेट पर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के बीच नजदीकियां बढ़ रही हैं। उन्होंने धर्मेंद्र से मजाक में कहा, धर्म जी सोच लीजिए, अगर आपने ठाकुर का रोल किया तो संजीव कुमार वीरू बनेंगे और फिर हेमा मालिनी के साथ रोमांस भी वही करेंगे। और धर्म जी मान गए? कहते हैं ये सुनते ही धर्मेंद्र तुरंत वीरू का रोल करने के लिए तैयार हो गए। वाह, तो कास्टिंग पक्की हो गई, स्क्रिप्ट फाइनल हो गई। अब बारी थी उस दुनिया को बनाने की जहां ये कहानी घटती, यानी रामगढ़। रमेश सिप्पी चंबल के असली बीहड़ क्यों नहीं दिखाना चाहते थे? क्योंकि वो एक देखी दिखाई लोकेशन नहीं चाहते थे। वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो असली लगे पर हो काल्पनिक। उन्होंने अपने आर्ट डायरेक्टर राम येड़ेकर को एक नई जगह खोजने का काम दिया। येड़ेकर ने दक्षिण भारत में महीनों खोज की और आखिरकार बेंगलोर के पास रामनगरम नाम की एक चट्टानी जगह चुनी। और वहां तो उस वक्त कुछ भी नहीं था सिवाय चट्टानों के? कुछ भी नहीं। कंस्ट्रक्शन मैनेजर अजीज हनीफ शेख की देखरेख में वहां सड़कें बनाई गईं, फोन लाइनें बिछाई गईं और रामगढ़ का पूरा गांव वो शून्य से खड़ा किया गया। संगीत पर भी काम शुरू हो गया था। आर.डी. बर्मन और आनंद बख्शी की जोड़ी पंचमदा। हाँ, और उनका काम करने का तरीका भी अनोखा था। वो एक साथ कई धुनें बनाकर एक बैंक की तरह पेश करते थे और डायरेक्टर को उनमें से चुनने को कहते थे।
उस दौर में संगीत के अधिकार भी बहुत बड़ी बात होते होंगे। बहुत बड़ी। पॉलीडोर नाम की म्यूजिक कंपनी ने संगीत के लिए 5 लाख रुपए की रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडवांस रॉयल्टी दी थी। उस जमाने में ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो सब कुछ सही रास्ते पर जा रहा था, स्क्रिप्ट, कास्ट, लोकेशन, संगीत। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा तूफान आया। हाँ, एक ऐसा तूफान जिसने लगभग फिल्म को डुबो ही दिया था। गब्बर के रोल के लिए चुने गए डैनी डेंजोंगपा, उनकी डेट्स फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा से टकरा गई। धर्मात्मा की शूटिंग अफगानिस्तान में होनी थी। दोनों बड़ी फिल्में थी, लेकिन डैनी ने फिरोज खान को पहले जुबान दे दी थी। उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता निभाई और शोले छोड़ दी। मैं उस वक्त सिप्पी कैंप में फैली घबराहट की कल्पना कर सकता हूँ। फिल्म का सबसे अहम किरदार, उसका विलन, शूटिंग से ठीक पहले फिल्म छोड़कर चला गया। अब गब्बर कौन बनेगा? यही सवाल सबके दिमाग में था। तब एक दिन सलीम खान ने बांद्रा बैंडस्टैंड पर एक थिएटर एक्टर को देखा। वो थे अमजद खान। सलीम खान उन्हें रमेश सिप्पी के पास ले गए। रमेश सिप्पी को अमजद का चेहरा, उनकी आवाज, उनका व्यक्तित्व पहली नजर में ही बहुत दिलचस्प लगा। लेकिन एक नए एक्टर को इतने बड़े और मुश्किल रोल के लिए चुनना तो बहुत बड़ा खतरा था। बहुत बड़ा। अमजद का स्क्रीन टेस्ट हुआ, उन्हें दाढ़ी बढ़ाने को कहा गया और आखिरकार उन्हें रोल के लिए चुन लिया गया। और एक खास बात यह भी है कि जिस दिन उन्हें ये रोल मिला, उसी दिन उनके बेटे शादाब का जन्म हुआ। क्या बात है। तो आखिरकार 2 अक्टूबर 1973 को शूटिंग का पहला दिन आया। हाँ, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही। उस दिन जोरदार बारिश हुई। पहला शॉट अमिताभ और जया के बीच फिल्माया गया, जो उस वक्त 3 महीने की गर्भवती थीं। वैसे सेट का माहौल एक पिकनिक जैसा था। पूरी यूनिट, सारे कलाकार एक परिवार की तरह बेंगलोर के पास ही रहते थे। सब साथ में रमी खेलते थे और मशहूर बावर्ची बहादुर के हाथ का बना लजीज खाना खाते थे। लेकिन अमजद खान के ये पिकनिक नहीं थी, उनके लिए तो ये अग्नि परीक्षा थी। बिल्कुल। उनका पहला ही सीन फिल्म का सबसे मशहूर सीन था। अरे ओ सांभा, कितने आदमी थे। और उस सीन को करते हुए वो इतने ज़्यादा नर्वस हो गए कि 40 से ज़्यादा रीटेक हुए। वो अपनी लाइनें भूल रहे थे, उनकी आवाज़ में वो दम नहीं आ रहा था। कहते हैं उस रात वो अपने होटल के कमरे में बहुत रोए थे। 40 रीटेक, और वो भी पहले ही दिन। यूनिट में तो कानाफूसी शुरू हो गई होगी। कानाफूसी से कहीं ज़्यादा। यूनिट में लोग कहने लगे कि अमजद एक गलत चुनाव है। बात इतनी बढ़ गई कि सलीम जावेद खुद रमेश सिप्पी के पास गए और उनसे अमजद को बदलने की बात कह डाली। मतलब जिन लेखकों ने अमजद को चुना था, वही अब उन्हें बाहर करना चाहते थे। ये तो बहुत बड़ी बात है। रमेश सिप्पी ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? क्या उन्हें अमजद में कुछ ऐसा दिखा जो किसी और को नजर नहीं आ रहा था? यही एक महान निर्देशक की पहचान होती है। रमेश सिप्पी अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने सबसे कहा, मैंने उसे चुना है और वही ये रोल करेगा, मुझे थोड़ा समय दो। उन्होंने अमजद को हिम्मत दी, लेकिन इस घटना ने अमजद खान और सलीम जावेद के बीच एक ऐसी दरार डाल दी जो फिर कभी नहीं भर पाई। और रमेश सिप्पी का ये भरोसा सही साबित हुआ। लेकिन उनका परफेक्शनिज्म तो सिर्फ कास्टिंग तक ही सीमित नहीं था, है ना? वो लैंप वाला सीन। हाँ, वो लैंप वाला सीन जहाँ जया बच्चन लैंप जला रही हैं और अमिताभ बाहर माउथ ऑर्गन बजा रहे हैं, उसे शूट करने में 20 दिन लगे। 20 दिन सिर्फ एक सीन के लिए, जिसमें कोई डायलॉग भी नहीं है। हाँ, क्योंकि रमेश सिप्पी को वो सीन सिर्फ मैजिक आवर में शूट करना था। सूरज ढलने की ठीक बाद की कुछ मिनटों की रोशनी। उस दौर में जब फिल्में कुछ महीनों में बन जाती थीं, एक सीन पर इतना वक्त और पैसा लगाना एक बहुत बड़ा जुआ था। इसका मतलब वो सिर्फ सीन नहीं शूट कर रहे थे, वो एक खास मूड, एक एहसास को कैमरे में कैद करना चाहते थे। बिल्कुल, वो एक भावना पैदा कर रहे थे बिना एक भी शब्द कहे। इसी तरह ठाकुर के परिवार के कत्ल का सीन 23 दिनों तक शूट हुआ, क्योंकि रमेश सिप्पी सही मूड के लिए बादलों वाले मौसम का इंतजार कर रहे थे। और सचिन के किरदार अहमद को घोड़े से गिरकर मरने में 17 दिन लगे। ये जुनून था, कोई समझौता नहीं। ये किताब वाकई सिर्फ एक फिल्म बनने की कहानी नहीं है, ये उस जुनून का, उन चुनौतियों का और कोई समझौता नहीं वाले रवैये का एक दस्तावेज है। बिल्कुल, इसकी मेकिंग की कहानी भी उतनी ही महाकाव्य है जितनी की खुद फिल्म। ये किताब दिखाती है कि कैसे एक आइडिया को हकीकत बनाने के लिए अनगिनत बाधाओं को पार करना पड़ता है। ये किसी भी रचनात्मक प्रक्रिया को समझने के लिए एक मास्टर क्लास है। एक बार फिर हम अपने सुनने वालों से कहेंगे, समय निकालकर अनुपमा चोपड़ा की शोले द मेकिंग ऑफ अ क्लासिक जरूर पढ़ें। लिंक शो नोट्स में है। और अब जब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं तो एक आखिरी विचार छोड़ जाते हैं। जो शोले हम सबने देखी और पसंद की है, वो असल में वो फिल्म नहीं है जो निर्देशक बनाना चाहते थे। फिल्म का असली अंत
कहीं ज्यादा अंधकार में और हिंसक था। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है। असली अंत में ठाकुर गब्बर को अपने नुकीले जूतों से मार मार के खत्म कर देता है और फिर वो जीत का जश्न नहीं मनाता बल्कि एक गहरे शून्य में देखकर रोता है। तो ये एक सवाल खड़ा करता है, जब किसी कलाकार की मूल सोच को सेंसरशिप जैसी बाहरी ताकतें बदल देती हैं तो उस कला का अंतिम अर्थ कैसे बदल जाता है? क्या कानून को जीतता हुआ दिखाने वाला वो सुखद अंत कहानी की उस असली दुखद शक्ति को कहीं न कहीं कम कर देता है? Also stell dir mal diese Szene vor. Bangalore, 1974. In einem schwülen Abend empfängt eine Wahrsagerin Dolores Pereira 3 Besucher. Sie ist eine ziemlich faszinierende anglo-indische Dame, eine Legende in der Stadt für ihre Tarotkarten. Und ihre Besucher sind ein junger Filmregisseur, ein großer, bärtiger Schauspieler, der, so steht's im Buch, dringend einen Bart zu brauchen scheint. Okay. Und dessen Frau. Und dieser Schauspieler, der steht noch ganz am Anfang seiner Karriere. Er hat die Rolle des Bösewichts in einem riesigen Film und wirklich alles, sein ganzer Erfolg, hängt an diesem einen Projekt. Also, und Dolores legt die Karten aus, es ist still, sie schaut auf, blickt diesem nervösen Schauspieler direkt in die Augen und macht eine absolut dramatische Vorhersage. Was sagt sie? Wow. Und die Reaktion. Der Regisseur und der Schauspieler schauen sich an, sie lächeln so ein bisschen skeptisch, amüsiert, aber klar, sie glauben es natürlich nicht. Natürlich nicht. Nur, der Film, von dem die Rede war Sholay. Er lief allein in einem Kino in Mumbai 5 Jahre. Ununterbrochen. Und der bärtige Schauspieler, das war Amjad Khan, der als der legendäre Bösewicht Gabbar Singh in die Geschichte eingehen sollte. Diese Wahnsinnsgeschichte, mit der wir hier starten, kommt direkt aus dem Buch Sholay, The Making of a Classic von Anupama Chopra. Und genau dieses Buch wollen wir uns heute mal genauer ansehen. Ja, es gibt nämlich einen ganz besonderen Grund, warum wir das gerade heute machen. Genau heute, am 12. Dezember 2025, kommt Sholay The Final Cut zum 50-jährigen Jubiläum wieder in die Kinos. Absolut. Restauriert in 4K mit Dolby 5.1 Sound. Und das ist ja das Besondere. Es ist das allererste Mal, dass die originale, ungeschnittene Fassung auf der großen Leinwand zu sehen ist. Genau. Und wegen dieses großen Ereignisses haben wir für dich eine kleine Programmänderung gemacht. Richtig. Unsere Weekend Classics, die du normalerweise am Samstag hörst, die senden wir ausnahmsweise schon heute am Freitag. Und die reguläre Freitagssendung, die gibt's dann einfach morgen für dich. So, aber bevor wir jetzt richtig einsteigen, vielleicht noch ein paar Worte zur Autorin Anupama Chopra. Sie ist eine preisgekrönte indische Journalistin und Filmkritikerin, hat in Mumbai und an der wirklich renommierten Middle School of Journalism in den USA studiert. Seit 1993 schreibt sie über das Hindi-Kino. Und man muss dazu sagen, sie ist mit dem bekannten Regisseur Vidhu Vinod Chopra verheiratet. Aber das Wichtigste ist eigentlich... Genau, dieses Buch Sholay, The Making of a Classic, hat 2001 den National Film Award als bestes Buch über Kino in Indien gewonnen. Wir haben es also mit einer wirklich außergewöhnlichen Quelle zu tun. Und wir können dir dieses Buch nur wärmstens ans Herz legen. Ganz ehrlich, egal ob du unseren Kanal abonnierst oder nicht, nimm dir die Zeit, dieses mit so viel Bedacht verfasste Werk zu lesen. Den Link packen wir dir in die Shownotes. Was wir heute vorhaben, ist, dich quasi Kapitel für Kapitel durch dieses Buch zu führen. Stell dir einfach vor, du bist neugierig, wie man die Entstehung so eines Klassikers überhaupt erforscht und erzählt. Wir arbeiten die wichtigsten Anekdoten und Erkenntnisse heraus und zeigen dir, wie meisterhaft hier eine Geschichte erzählt wird. Also, fangen wir an. Alles beginnt auf einer Party im Januar 1973. Ein fiebriger, damals noch recht unbekannter Amitabh Bachchan versucht eine Rolle in der nächsten großen Produktion von G.P. Sippy zu ergattern. Er fühlt sich krank, sein Kopf dröhnt, aber er lächelt halt tapfer für die Fotografen. Aber er fühlt sich auch komplett fehl am Platz. Vor allem, als dann der charismatische und aufstrebende Shatrughan Sinha den Raum betritt. Ja, und für alle Anwesenden ist sofort klar, er ist die offensichtliche Wahl für die zweite Hauptrolle. Ein Filmverleiher flüstert dem Regisseur Ramesh Sippy sogar ins Ohr, denk nicht mal an diesen langen Kerl. Und mit dem langen Kerl war natürlich Bachchan gemeint. Man muss dazu ein bisschen den Kontext der Zeit verstehen. Das Bollywood-Kino der frühen 70er war im Umbruch.
Die alte Garde war am Verblassen? Genau. Und der amtierende Superstar, Rajesh Khanna, begann nach einem kometenhaften Aufstieg zu straucheln. Das Publikum sehnte sich nach etwas Neuem, etwas anderem. Und Indien selbst war ja in einer Zeit des sozialen und politischen Aufruhrs. Und das war der perfekte Nährboden für diesen neuen Archetyp, den des Angry Young Man, des wütenden jungen Mannes, den Bachchan dann bald wie kein anderer verkörpern sollte. Im Zentrum von Sholay standen 3 Männer. Der junge, ehrgeizige Regisseur Ramesh Sippy und das aufstrebende Autorenduo Salim Javed. Und die beiden wollten nicht nur Geld, sie wollten vor allem eines: Anerkennung. Ihre Namen sollten endlich auf den Filmplakaten stehen. Ganz genau. Die waren nämlich stinksauer, weil ihr letzter erfolgreicher Film einfach dem Sippy Story Department zugeschrieben wurde. Also haben sie Ramesh Sippy auf einer Dachterrasse zur Rede gestellt. Und er hat ihnen ein Versprechen gegeben. Ja, er sagte, der nächste Film, der wird genauso sehr eurer wie meiner sein. Und dieser nächste Film basierte auf einer Idee, die war kaum mehr als ein Tweet heute. Eine 4-zeilige Idee. 4 Zeilen. Was war das für eine Idee? Ein pensionierter Offizier heuert 2 Kriminelle an, um Rache an einem Banditen zu nehmen, der seine Familie ausgelöscht hat. Das war's. Das ist alles. Das war alles. Und diese Idee wurde von den größten Regisseuren der Zeit abgelehnt. Zu dünn, zu westlich hieß es. Aber die Sippys, die suchten nach einem grandiosen Multistarer und die sahen das Potenzial. Sie sagten zu Salim Javed, entwickelt diese 4 Zeilen. Und wie wird denn aus 4 Zeilen eines der größten Drehbücher des indischen Kinos? Indem man sich einen Monat lang in einem kleinen beigen Raum einsperrt. Angetrieben von Unmengen an Tee und Bier. Die 3 Ramesh Sippy, Salim Khan und Javed Akhtar haben aus diesem Kern eine 3-stündige Saga entwickelt. Die Inspirationen, die kamen aber schon klar aus dem Westen, oder? Aus Hollywood. Absolut. Hollywood-Western wie Butch Cassidy and the Sundance Kid, aber auch aus Kurosawas Meisterwerk Die 7 Samurais. Man spürt diese Einflüsse, ja, aber der Film fühlt sich trotzdem so einzigartig an. Was macht das Drehbuch so besonders? Die Struktur. Die ist voller brillanter Symmetrien und Spiegelungen. Du hast den ehrenhaften, prinzipientreuen Thakur auf der einen Seite und den komplett amoralischen, chaotischen Banditen Gabbar auf der anderen. Genau. Du hast den extrovertierten, lauten Frauenhelden Viru und den sardonischen, in sich gekehrten Jai. Und dann die redselige, lebenslustige Basanti gegenüber der stillen, in weiß gekleideten Witwe Radha. Diese perfekte Balance gibt der klassischen Gut gegen Böse Geschichte eine unglaubliche Tiefe. Und die Charaktere selbst, die fühlen sich so echt an. Im Buch steht ja, dass viele von ihnen reale Vorbilder hatten. Ja, und das sind einige der besten Anekdoten. Gabbar Singh war ein echter Bandit aus den 50ern, berüchtigt für seine Grausamkeit. Surma Bhopali war ein Bekannter von Javed Akhtar aus seiner Heimatstadt. Und Thakur Baldev Singh? Das war der Name von Salim Khans Schwiegervater, der jahrelang nicht mit ihm sprach, weil Salim als Muslim seine Tochter geheiratet hatte. Wow, das ist ja quasi eine persönliche Abrechnung. Aber die allerbeste Geschichte ist doch die, wie die berühmte Highlight-Szene entstanden ist. Oh, die ist unschlagbar. Also in der Realität hatte sich Javed Akhtar in die Schauspielerin Hani Irani verliebt und wollte um ihre Hand anhalten. War aber zu schüchtern. Genau. Also schickt er seinen Partner Salim los, um bei Iranis Mutter für ihn zu werben. Aber Salim war selbst nicht von der Verbindung überzeugt und hat den Antrag auf die komischste Art sabotiert. Was hat er gemacht? Er sagte der Mutter: Also, der Junge ist eigentlich ganz in Ordnung, aber er trinkt ein bisschen zu viel und wenn er getrunken hat, dann geht er auch schon mal ins Rotlichtviertel. Ist ja unglaublich. Er hat also quasi Live-Material für die Komödie im Film gesammelt. Kein Wunder, dass sich diese Szenen so echt anfühlen. Absolut. Das Drehbuch stand also. Aber die richtigen Schauspieler zu finden, das war dann die nächste große Schlacht. Und was für eine. Dharmender und Hema Malini waren als Starpaar gesetzt. Aber die große Frage war, wer spielt Jai, den stillen Partner? Die Verleiher wollten unbedingt den Star Shatrughan Sinha. Aber Salim Javed, die haben mit Händen und Füßen für den damals als Flop-Schauspieler geltenden Amitabh Bachchan gekämpft. Warum? Sie hatten sein Talent in einem anderen Film gesehen und wussten einfach, er ist der Richtige. Und sie haben sich am Ende durchgesetzt.
Was ich am faszinierendsten fand, war, dass danach jeder Schauspieler eine andere Rolle spielen wollte, als die, für die er eigentlich vorgesehen war. Ja, das war das reinste Chaos. Sanjeev Kumar, der den Taku spielen sollte, wollte unbedingt den Bösewicht Gabbar spielen. Sogar Amitabh wollte Gabbar sein. Und Dharmender, der war für Viru gecastet, wollte aber plötzlich den Thakur spielen, weil er wusste, dass das die zentrale Figur ist. Da musste Ramesh Sippy ihn mit einem cleveren Trick überzeugen. Erzähl. Er nahm ihn beiseite und sagte, hör zu, wenn du den Thakur spielst, bekommt am Ende Sanjeev die Hema Malini. Daraufhin hat Dharmendra sofort zugestimmt, bei Viru zu bleiben. Okay, die Besetzung steht. Jetzt brauchten sie eine Welt für diese Geschichte. Und da hat Sippy ja von Anfang an gesagt, keine Klischees. Genau. Er wollte weg von diesen üblichen Chambal-Schluchten, die man in jedem Banditenfilm sah. Er schickte seinen Artdirektor Ram Yedekar wochenlang auf die Suche durch ganz Indien. Und er fand dann diese surreale, felsige und karge Landschaft namens Ramanagaram in der Nähe von Bengaluru. Und dann haben sie dort nicht einfach nur eine Kulisse hingestellt. Nein, sie haben ein ganzes Dorf gebaut. Ein ganzes, funktionierendes Dorf. Ramgarh wurde von Grund auf errichtet. Mit Straßen, Häusern, einem Tempel, einer Moschee und vor allem mit der gesamten Infrastruktur, um Hunderte von Crewmitgliedern monatelang zu versorgen. Das zeigt diese absolute Keine-Kompromisse-Philosophie der Sippys. Die bauten keine Kulisse, sie bauten eine Welt. Und passend dazu war auch der Musikdeal mit Polido Record verdächtig. 500.000 Rupien im Voraus für die Musik von R.D. Burman. Alles scheint perfekt zu laufen. Das Drehbuch ist da, die Stars sind an Bord, die Welt ist gebaut. Und dann, kurz vor Drehbeginn, die absolute Katastrophe. Plötzlich standen sie ohne Bösewicht da. Danny Dengzongpa, die ursprüngliche und bereits öffentlich angekündigte Wahl für Gabbar, musste wegen einer Terminkollision aussteigen. Völlige Panik. Ja, sie hatten alles, nur nicht den zentralen Antagonisten. Und in dieser Verzweiflung stoßen sie dann auf Amjad Khan, einen Theaterschauspieler, den im Kino praktisch niemand kannte. Ein reiner Zufall. Salim Khan hatte ihn auf der Straße getroffen und erinnerte sich an ihn. Er wurde zu einem kurzen Screentest eingeladen und bekam die Rolle. Wahnsinn. Am selben Tag, dem 20. September 1973, wurde sein Sohn Shadab geboren. Es schien wie ein Omen. Gleichzeitig trafen die Sippys noch eine weitere wegweisende Entscheidung. Sie würden den Film in 70 mm mit stereophonem Ton drehen. Das gab's in Indien noch nie. Ein enormes finanzielles und logistisches Risiko. Absolut. Der Dreh beginnt und im Buch wird die Atmosphäre anfangs als fast idyllisch beschrieben, wie ein Picknick. Aber das endete sich schnell, als Ramesh Sippys Perfektionismus durchkam. Und wie? Die ikonische Massakerszene, in der Gabbars Männer die Familie des Thakurs auslöschen, die hat 23 Tage gedauert. 23 Tage. Nicht wegen der Action, sondern weil Sippy auf den perfekten, bewölkten Himmel für die düstere Stimmung wartete. Die Aufnahmen von Radar, die in der Abenddämmerung die Lampen löscht, die dauerten 20 Drehtage. 20 Tage für ein paar Minuten Film, die nur in der sogenannten Magic Hour, den wenigen Minuten nach Sonnenuntergang, gedreht werden konnten. Während das Team also mit dem Wetter kämpft, durchlebt der neue Bösewicht, Amjad Khan, die absolute Hölle. Sein erster Drehtag, ausgerechnet die berühmteste Szene des Films. Kitne Admite. Wie viele Männer waren es? Er ist so unfassbar nervös, seine Hände sind steif, seine Stimme, die später so berühmt werden sollte, zittert. Nach 40 Versuchen hat er die Szene immer noch nicht im Kasten. 40 Versuche. Der Druck muss unvorstellbar gewesen sein. Am Set machen sofort Gerüchte die Runde, dass er ersetzt werden soll. Sogar Salim Javed, die ihn ja empfohlen hatten, gingen zu Ramesh Sippy und sagten, hör zu, wenn du nicht zufrieden bist, tausch ihn aus, es ist unser Fehler. Aber Ramesh Sippy blieb standhaft. Er hat an ihn geglaubt. Sie hatten also ihre Welt gebaut und die Kameras liefen. Man sollte meinen, ab da wird's einfacher. Aber die wahren Probleme fingen da erst an, oder? Absolut. Der Film war schon massiv verspätet und weit über dem Budget. Die Filmbranche in Mumbai tuschelte bereits, dass die Sippys sich übernommen hatten und auf eine Katastrophe zusteuerten. Und um die Action dann noch auf Hollywood-Niveau zu heben, wurde ein Stunt-Team aus London eingeflogen.
Genau. Das war eine Revolution für das Hindi-Kino, führte aber zu noch mehr Verzögerungen und kulturellen Konflikten am Set. Und dann war da diese Zugsequenz. Ich habe im Buch gelesen, die hat 7 Wochen gedauert. 7 Wochen. Das ist doch Wahnsinn für eine Szene von ein paar Minuten. Ein logistischer Albtraum. Sie müssten auf einer aktiven Bahnstrecke drehen, was bedeutete, dass sie immer wieder für echte Züge unterbrechen mussten. Es war extrem gefährlich. Und nachdem sie diesen ganzen Aufwand überlebt haben, kam der eigentliche Feind nicht vom Filmset, sondern aus einem Büro. Die Zensurbehörde. In Indien herrschte damals der Ausnahmezustand, eine Zeit der politischen Repression. Und die Zensoren waren extrem streng. Was war das Problem? Das brutale Originalende. In dem tritt der Thakur Gabbar mit seinen genagelten Schuhen brutal zu Tode. Das wurde komplett abgelehnt. Die Begründung? Ein Polizist, auch außer Dienst, dürfe das Gesetz niemals in die eigene Hand nehmen. Und dann mussten sie den ganzen Höhepunkt neu drehen. Unter enormem Druck. Das gesamte Ende musste umgeschrieben und neu gedreht werden. In der neuen, zensierten Version greift die Polizei im letzten Moment ein und verhaftet Gabbar. Gibt es das Originalende noch? Es gibt Gerüchte, dass Kopien noch irgendwo existieren. Nach all diesen Kämpfen, Verzögerungen und Kompromissen kommt endlich der Tag der Premiere. Und was passiert? Stille. Totale Stille im Kinosaal. Niemand klatscht. Nichts. Die Kritiker haben den Film in der Luft zerrissen. Bikram Singh von der renommierten Filmfair nannte ihn eine erfolglose Transplantation eines Westerns in das indische Milieu. Oha. Die gesamte Branche sagte genüsslich eine absolute Katastrophe voraus. Es gab eine panische Krisensitzung im Haus von Amitabh Bachchan, wo man ernsthaft vorschlug, das Ende noch einmal zu ändern und die Figur des Jai doch überleben zu lassen. Das ist ja unglaublich. Der Film endet also in der ersten Woche in einer tiefen Depression für alle Beteiligten. Vollkommen. Amjad Khan war am Boden zerstört und sagte verzweifelt zu seiner Frau, ich habe den Zug verpasst. Die Fachpresse war sich einig, Sholay war der größte Flop des Jahres. Und auf diesem Höhepunkt des absoluten vermeintlichen Scheiterns endet die Produktionsgeschichte in Anupama Chopras Buch. Genau. Diese anfängliche, fast einstimmige Ablehnung durch die Kritiker und die gesamte Branche wirft ja eine wirklich grundlegende Frage auf, die weit über diesen einen Film hinausgeht. Absolut. Und das ist der letzte Denkanstoß, den wir dir mitgeben wollen. Was sagt das über die Natur von klassischer Kunst aus? Werden Klassiker geboren oder werden sie erst im Laufe der Zeit von einem Publikum geschaffen, das sich einfach weigert, sie gehen zu lassen? Wie sehr hängt das Vermächtnis eines Films von seiner unmittelbaren Rezeption ab im Vergleich zu seinem langfristigen kulturellen Echo, das über Jahrzehnte nachhallt? Genau. Eine Frage, die direkt aus diesem Material entsteht, aber eine ganz neue, tiefere Überlegung für dich anstößt.